Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Osama Farouk और मैं हूँ आज आपके सामने. Let's get started. आज के एक पाइथन का एक काम है, मशीन लर्निंग पाइथन वगैरह से रिलेटेड. मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फाइल. ठीक है, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं. ये रिकॉर्ड में जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग. लेट्स स्टॉप इट. लेट्स मिनिमाइज इट. फाइल एक्सप्लोरर, डाउनलोड्स. वन सेकेंड. ठीक है, डाउनलोड्स और वन मोर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, ये देखें असाइनमेंट वन रिग्रेशन एंड स्टक्सनेट डॉट डॉक. अच्छा, ये देखें कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. अच्छा, EC818 मशीन लर्निंग फॉर एम्बेडेड सिस्टम स्प्रिंग 24 2024. Assignment 1, Stuxnet and linear regression. You have to research the disaster caused by Stuxnet virus to the plants of Iran from the point of view of machine learning and embedded system. Your report must address the following areas: how the Stuxnet was spread to the nuclear plants, the technologies and the techniques and technologies used, what technology was exploited to cause damage to the plants in context of embedded systems, how security of the nuclear plants was compromised using a crude form of machine learning. In your opinion, what effect this virus could have had on Pakistani plants? What measures can be taken to prevent such event from happening in Pakistan? Following blog has 10 mentioned 10 different datasets that can be used for linear regression. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. तो ये बेसिकली मेरी असाइनमेंट है और हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि आप चैट जीपीटी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैंने वैसे ये कर भी लिया था. लेट्स सी कि ये पड़ा हुआ है मेरे पास के लिए. ये देखें असाइनमेंट, ये देखें, ये मैंने कुछ बनाया था. अब देखते हैं कि इसको मजीद हमें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं. आंसर 1, researching the Stuxnet virus and its impact on Iranian nuclear plants from the perspectives of machine learning and embedded systems reveals intricate details about its spread and exploitation of technology, compromise security, potential effects on other plants like those in Pakistan, and preventive measures. Here's breakdown of each area. Spread of Stuxnet to nuclear plants. Stuxnet was propagated through various vectors, including infected USB drive, network shares, and exploit of vulnerabilities in Windows systems. It utilized sophisticated techniques such as zero-day vulnerabilities and rootkit capabilities to infect the systems. Moreover, it employed techniques like network propagation and worm-like behavior to rapidly spread within the target networks. Acha, exploited technology in embedded systems. Stuxnet specifically targeted programmable logic controllers (PLCs) and supervisory control and data acquisition (SCADA) systems, ठीक है, which are integral components of industrial control systems (ICS). By exploiting vulnerabilities in these systems, Stuxnet was able to manipulate the centrifuges or used in the uranium enrichment process. It tampered with the frequency converters, causing them to spin at erratic speeds, leading to physical damage on to the centrifuge. Yes. Compromised security via crude machine learning. Stuxnet utilized a form of machine learning to identify its target systems. It employed a technique called man in the middle attack, where it intercepted and manipulated the communication between the PLCs and the SCADA systems by analyzing the normal operating parameters of the centrifuges. Stuxnet could then adjust the speed of the centrifuges to sabotage the enrichment process. While not a sophisticated machine learning model in the contemporary sense, it demonstrated a level of adaptive behavior to achieve its goals. Potential effects on Pakistani plants. If Stuxnet were to infect nuclear plants in Pakistan, similar catastrophic consequences could occur. Pakistani plants, like those in Iran, rely on similar industrial control systems vulnerable to such cyber attacks. The damage could disrupt operations, compromise safety protocols, and potentially lead to nuclear accidents or sabotage.
Preventive measures for Pakistan to prevent similar events in Pakistan. Several measures have been taken. Regular cybersecurity audits and updates to patch vulnerabilities in industrial control systems, implementation of strict access controls and network segmentation to limit the spread of malware within the plant's network, training for plant personnel over cybersecurity on training for plant personnel on cybersecurity best practices and recognizing potential threats like phishing attempts or malicious USB drives, deploying intrusion detection and prevention systems (IDPS) to detect and mitigate cyber threats in real time, collaboration with international cyber security agencies, and sharing of threat intelligence to stay updated on emerging threats and vulnerabilities. By implementing these preventive measures, Pakistani nuclear plants can bolster their cybersecurity defenses against sophisticated malware like Stuxnet and mitigate the risk of cyber attacks. अच्छा ये अब हमने चैट जीपीटी से किया था, थोड़ा सा हम इसके ऊपर और वर्किंग कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि हमारा जो हमने काम किया वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो यू हैव टू रीसेट डिजास्टर कॉज्ड बाय स्टक्सनेट वायरस टू द प्लांट्स ऑफ इरान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, सबसे जाके पहले हम जाके देखेंगे कि स्टक्सनेट क्या चीज़ है। ठीक है, हम्म, ये देखें, यहाँ मैं लिखता हूँ स्टक्सनेट। Stuxnet is a malware computer worm first uncovered in 2010 and thought to have been, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, विकिपीडिया ही कुछ बता दे हमें। First uncovered in 2010 and thought to have been in development since at least 2005. Stuxnet targets supervisory control and data acquisition SCADA systems, and it is believed to be responsible for causing substantial damage to the nuclear program of Iran. Although a nuclear country has openly admitted responsibility, multiple independent news organizations recognize Stuxnet to be a cyber weapon built jointly by the United States and Israel in a collaborative effort known as Operation Olympic Games. The program started during the Bush administration was rapidly expanded within the first month of Barack Obama's presidency. Stuxnet specifically targets programmable logic controllers PLCs, which allow the automation of electromechanical processes such as those used to control machinery and industrial processes, including gas centrifuges for separating nuclear material, exploiting four zero-day flaws. Stuxnet functions by targeting machines using the Microsoft Windows operating system and networks. Then seeking out Siemens Step 7 software. Stuxnet reportedly compromised Iranian PLCs, collecting information on the industrial systems and causing the fast spinning centrifuges to tear themselves apart. Stuxnet's design and architecture are not domain specific and it could be tailored as a platform for attacking modern SCADA and PLC systems. Example in factory assembly lines or power plants, most of which are in Europe, Japan, and the United States. Stuxnet reportedly ruined almost one-fifth of Iran's nuclear centrifuges, targeting industrial control systems. The worm infected over 200,000 computers and caused 1,000 machines to physically degrade. Stuxnet has three modules: a worm that executes all routines related to the main payload of the attack, a line file that automatically executes the propagated copies of the worm, and a toolkit component responsible for hiding all malicious files and processes. To prevent detection of Stuxnet, it is typically introduced to the target environment via an infected USB flash drive, thus causing any air gap. The worm then propagates across the network, scanning for Siemens Step 7 software on computers controlling a PLC. In the absence of either criterion, Stuxnet becomes dormant inside the computer. If both the conditions are fulfilled, Stuxnet introduces the infected rootkit onto the PLC and Step 7 software, modifying the code and giving unexpected command to the PLC while running a loop of normal operation system values back to the users. Discovery: Stuxnet discovered by Sergey Oleson from Belarusian antivirus company. Virus block era initially spread via Microsoft Windows and targeted Siemens industrial control systems.
While it is not the first time that hackers have targeted industrial systems, nor the first publicly known intentional act of cyber warfare to be implemented, it is the first discovered malware that spies on and subverts industrial systems, and the first to include a programmable logic controller PLC rootkit. The worm initially spreads indiscriminately, but includes a highly specialized malware payload that is designed to target only Siemens supervisory control and data acquisition SCADA systems that are configured to control and monitor specific industrial processes. Stuxnet infects PLCs by subverting the Step 7 software application that is used to reprogram these devices. Different variants of Stuxnet targeted five Iranian organizations, with the probable target widely suspect to be uranium enrichment infrastructure in Iran. Semantic noted in August 2010 that 60% of the infected computers worldwide were in Iran. Siemens stated that the bomb caused no damage to its customers, but the Iran nuclear program, which uses embargoed Siemens equipment procured secretly, was damaged by Stuxnet. Kasperi, Kaspersky Lab concluded that the sophisticated attack could only have been conducted with nation state support. Secure's chief researcher Mikko Hipponen, when asked if possible nation state support were involved, agreed. That's why it would look like yes. In May 2011, the PBS program Need to Know cited a statement by Gary Samore, White House coordinator for arms control and weapons of destruction, in which he said, "We are glad the Iranians are having trouble with their centrifuge machine, and that we, the US and its allies, are doing everything we can to make sure that we complicate matters for them, offering winking acknowledgement of United States involvement in Stuxnet." According to Telegraph, a show reel that was played at a retirement party for the head of the Israel Defense Forces (IDF), Gabi Ashkenazi, included references to Stuxnet as one of his operational successes as the IDF Chief of Staff. On 1 June 2012, an article in the New York Times reported that Stuxnet was part of the US and Israeli intelligence operation named Operation Olympic Games, devised by the NASA under President George W. Bush and executed under President Barack Obama. On 24 July 2012, an article by Chris Zik from CNET reported that the Atomic Energy Organization of Iran emailed F-Secure's chief researcher officer Mikko Hipponen to report a new instance of malware. On 25 December 2012, an Iranian semi-official news agency announced there was a cyber attack by Stuxnet, this time on the industries in the southern area of the country. The malware targeted a power plant and some other industries in Hormozgan province in recent months, according to Eugene Kaspersky. The worm also infected a nuclear power plant in Russia. Kaspersky noted, however, that since the power plant is not connected to the public internet, the system should remain safe. History. The worm was first identified by the security company Virus Blockera in mid-June 2010. Journalist Brian Kerb's blog posting on 15 July 2010 was the first widely read report on the worm. The original name was given by Virus blog. AD was rootkit TM Fitter. Semantic, however, called it W32 Temfit, later changed to W32 Stuxnet. Okay. So ये थोड़ा सा बेसिक्स हमने जो है अब चेक कर लिए अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन से ईरान इंडोनेशिया इंडिया अजरबैजान यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान अदर कंट्रीज ठीक है अच्छा ऑपरेशन अच्छा तो नीचे ये देखें द विंडोज द वर्म कंसिस्ट ऑफ अ layered attack against three different systems: the Windows operating system, Siemens PCS 7, WinCC, and Step 7 industrial software applications that run on Windows. And number three पे लिखा हुआ है one or more Siemens S7 PLCs. अच्छा, Step 7 software infection. अब इसका थोड़ा सा
ये देख लेते हैं। अच्छा, स्टेप 7, request code block from PLC, show code block from PLC to user, STL code block, S70T BXDX.dll, S7BLK read STL code block, PLC STL code block। अच्छा, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है। अच्छा, अगले देखते हैं। Step 7, request code block from PLC, show code block from PLC to user, modified STL code block, Stuxnet S70OTBXDX.dll, S7BLK read STL code block, but original but renamed S7 OTBXSX.dll, S7BLK read STL code block, PLC STL code block। ठीक है। अच्छा, पीएलसी इन्फेक्शन, ये पहली बारी जो मैंने लिखा हुआ नीचे, ओवरव्यू ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशंस बिटवीन स्टेप 7 एंड सीमेंस पीएलसी। नीचे में लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ स्टक्सनेट हाईजैकिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी 7 सॉफ्टवेयर एंड अ सीमेंस पीएलसी। अच्छा, पीएलसी इन्फेक्शन, इसको देखते हैं खोल के। ये जो है, अच्छा ये पीएलसी हैं, सीमेंस की हैं। ठीक है। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखा हुआ था। Siemens Symantec S7300 PLC CPU with 3 input-output modules attached। ठीक है, तो ये 3 input-output modules लग रहे हैं। अम, नहीं, मेरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे चलते हैं। अच्छा, रिमूवल, कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी, टारगेट। अच्छा, तो ये देखें। अच्छा, ये देखें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स गार्डिंग नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी। एंटी एयरक्राफ्ट गन। अच्छा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स गार्डिंग नातान न्यूक्लियर फैसिलिटी, नातान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अच्छा, आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अच्छा। अच्छा। हम्म, इसमें जो है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, जनरल हमें जो है वो आइडिया हो गया कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स इफ वी गो बैक और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। स्टक्सनेट। हम्म, ठीक है। स्टक्सनेट मालवेयर बाइट्स। अच्छा, और भी देखें वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली बता रही हैं क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा। ये वो वीडियोस भी हैं इसके ऊपर। हम्म, अच्छा, थोड़ी शॉर्ट देख रहे हैं। इसको देख के मैं विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि जो है वो देखें वीडियो जिस तरह वो बता रहा है बिल्कुल कि ठीक है। और अच्छा। अच्छा। अच्छा जी। हम्म, हम्म,
ठीक है, जनरली एक अच्छा इसमें। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये क्या कहता है। अच्छा। हम्म। अच्छा जी। हम्म। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हम्म। अच्छा। ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। An unprecedented look at Stuxnet, the world's first। ठीक है, कैस्पर्सकी वालों ने भी कुछ ना कुछ शायद। Stuxnet, ये देखिए, is a highly sophisticated computer worm that exploited Windows zero-day vulnerabilities to infect and damage Iran's nuclear centrifuge in 2010। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी देखने वाला एक तरह से है, देख लेते हैं इसको बाद में। अच्छा, सी से नॉर्ड वीपीएन, स्टक्सनेट, नॉर्ड वीपीएन, ये भी देख लेते हैं इन लोगों से, क्योंकि ये वो वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली वायरस एंटीवायरस वाले काम करती हैं। वो इनमें से मेरा ख्याल है किसी ने डिटेक्ट किया, लेट्स सी। अच्छा, आई थिंक इनफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि हम छोड़ने ही लगे हैं, तो लेट्स गो ऑन द इमेजेस। थोड़ा सा जाके इमेजेस वाइज भी हम इसको देख लेते हैं कि लोगों ने जो है वो बनाए हुए हैं इनकी तस्वीरें वगैरह के। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब अगर इस तस्वीर को हम देखते हैं तो ये आप देखें, इसको मैं करता हूँ कि जो है ये देखें इसको फुल स्क्रीन। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर साबुटाज हाउ स्टक्सनेट डिस्टर्बेड ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, the malicious computer worm probably entered the computer system which is normally cut off from the outside world at the uranium enrichment facility in Natanz via removable USB memory। ठीक है, अच्छा उसके बाद the virus is controlled from the servers in Denmark and Malaysia with the help of two internet addresses both registered to false names। The virus infects some 100,000 computers around the world। Number three, Stuxnet spreads through the system until it finds computers running the Siemens control software step 7, which is responsible for regulating the rotational speed of the centrifuges. So the computer worm varies the rotational speed of the centrifuges. This can destroy the centrifuges and impair uranium enrichment. Okay. The computer worm vary rotational speed of the centrifuges, and this can destroy the centrifuges and impair uranium enrichment। आगे Iran centrifuges for uranium enrichment। अच्छा, नीचे क्या हुआ? The Stuxnet attack start in June 2009। From this point on, the number of inoperative centrifuges increases sharply। ठीक है, स्टैट्स क्या दे रहा है? February 1 में आउट ऑफ ऑपरेशन 1000, और अच्छा मई 24 आउट ऑफ ऑपरेशन 2010 में। अच्छा, ठीक है, चलें, जनरली हमें एक आइडिया हो गया है कि इसमें व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। अच्छा, बस मेरा ख्याल है कि लेट्स मूव ऑन, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैग्स क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलें, अब यहाँ से हम जाते हैं
यहाँ पे आ गए हम। स्टक्सनेट एक्सप्लेन व्हाट इज ये कैस्पर्सकी। अच्छा, Stuxnet explained why is it, who created it, and how it works. We, अच्छा, what is Stuxnet? ये अब जनरली तो इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे से कि कैसे इसका जो है हम। ठीक है। हम्म, ठीक है, चल जनरली मेरा ख्याल है हमें आइडिया हो गया, आगे आ जाते हैं। Stuxnet explained the worm that went nuclear. अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा सा इन्होंने कुछ बनाई हुई है फिगर, और चले आगे चलते हैं। किसी तरह फुल स्क्रीन में नहीं चले, बस ठीक ही जा रहा है हमारा मामला भी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट एज फुल स्क्रीन F11। अच्छा, F11 करके देखते हैं। ओ ग्रेट, ठीक है। तो फिर उसमें टैब कैसे चेंज होंगे, ये भी एक बिग क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये वाला डॉक्यूमेंट हम अगर हमने देख लिया, अब हम इस पे आ रहे हैं, देख रहे थे हम। तो अब लेट्स सी के जो है ना। अच्छा, अच्छा जी। What is Cyclops Blink? How does it work? Linux malware types and protection. ठीक है। Started to development started. First variant appeared. Stuxnet started to spread. Stuxnet identified. ठीक है, ये जनरल टाइमलाइन दे दी है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ था? Sons of Stuxnet, ये सारी भी जो है उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। Interesting facts. Stuxnet in the first piece of malware that infected target devices via USB. अच्छा, how to protect yourself from Stuxnet. ठीक है, ओके। Remote desktop protocol RDP, everything you need to know. Viruses on Chromebook, how to check for and get rid of them. Pegasus spyware, what do you need to know? हाँ, must be more relevant for industry के जो बंदे हैं, जिनकी कंपनीज हैं बेसिकली, maybe they want to protect जो है ना more। ठीक है, तो let's move back। अच्छा, अब हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम कर लेते हैं एक दफ़ा, मैं ख्याल ये भी मैंने कुछ खोला था यहाँ पे। ठीक है, ये तो ऐसे ही। अच्छा, अब हम एक दफ़ा ये कर लेते हैं कि इन सारे टैब्स को, मेरा ख्याल है